I think his senior was MBA from IIM Calcutta or something. He was getting almost twice the pay, and this my colleague was not getting that much pay. So that is quite unfair to see it in some way. ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई लोगों का सपना ही शुरू होता है एंड इज इट रेलिवेंट फॉर सी एस टू डू एन एम बी ए? क्या एडवाइस है तेरा? And you know your career path is fixed. Okay, if I don't do MBA, within 2-3 years I'll. All right, hi everyone, welcome on board. Today we've got our own Aditi Parav, 97.02 percentile, CAA Bandi, verbal reading 97, DLR 91 and quant is 95 percentile. I'm so proud. verbal में तेरा ज़्यादा स्कोर है। यहाँ पे कोई verbal कम वाला आता है ना, पूछता हूँ भाई तूने नाक कटाई मेरी, verbal में कम है। Nevertheless, बहुत सही बंदी है ये। CA के बाद उसने MBA क्यों किया? And she was a part of the Cat King family for nearly a year's time and she's killed it for sure. एंड बंदी के कॉल्स आए भर भर के। अदिति, फर्स्ट ऑफ ऑल यार अपनी कॉल्स बता, व्हाट ऑल कॉल्स यू गॉट? So I got MDI Gurgaon, I got IIT Bombay, I got NMAT calls, and I got CAT calls. I am calls. बहुत बढ़िया। तो 8 IIM की कॉल हैं और IIT बॉम्बे भी हैं और MD गुड़गांव भी है। बहुत ही बढ़िया। फेवरेट कौन सा है? कहाँ जाएगी कहाँ तू, ये बता पहले। MDI Gurgaon. MD गुड़गांव, क्या बात है। IIT बॉम्बे नहीं जाना? Yeah. IIT Bombay is great, but MDI is more favorable for me. That's lovely, that's lovely. Good यार, let's get to the journey यार। पहली बात तो CAs को MBA करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई लोगों का सपना ही शुरू होता है डिलॉयट, EY, PwC, KPMG, बिग 4 में पहुंच जाएं और बस वही ज़िंदगी है। और तूने अपनी आर्टिकलशिप भी डिलॉयट में 3 साल लगाए हैं। तो जहाँ लोगों के सपने ख़त्म होते हैं वहाँ तुमने ख़त्म अपने कर लिए हैं एंड नाउ यू मूविंग इन फॉरवर्ड। what made you do an MBA first of all and is it relevant for CS to do an MBA? क्या एडवाइस है तेरा? So when I was doing CA, it was majorly based on like finance part of the business. It was lacking the strategic operational part of knowing how the business is run. And so I think that is where MBA can help you to groom you around to understand how businesses work and apply that financial knowledge which you learn in CA. So that is one of the reasons which I think CA should consider doing MBA. That's great, that's great. And some CAs get stuck. You were also stuck in between, है ना? एक दो अटेम्प्ट तेरे भी गए हैं। अटेम्प्ट तो लग जाते हैं Yeah. कई सीओ के, CAs के। हाँ. क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जो लोग अटके पड़े हैं CA डिग्री में? 25 साल उम्र हो गई है, 26-27 हो गई है, चौथा अटेम्प्ट चल रहा है, पांचवा अटेम्प्ट चल रहा है। अब तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई तेरा क्या कर रहा है तू यार? मूवी भी आई है हाफ CA करके, है ना? तो क्या एडवाइस है Yeah. उनके लिए? क्या एडवाइस है? So I feel like firstly you need to understand like what are your reasons for your failure. Like is it lack of studies? Is it lack of other things? If it is not happening, I think you should take a call. Like okay, this is going to be my last attempt, and iske baad I'm going to full fledged find some other career and do along with CA or like leave CA and then do it. Like I've seen many of my friends also, and in many of MBA interviews also I've seen many CA inter dropouts who then turn to MBA. So that is completely a personal call. But I feel that somewhere like putting efforts in right direction matters much more than giving like being stuck on a course. Like sometimes it's like वो जिद बन जाती है कि ये course complete करना है, but sometimes it's like तुमको life में क्या करना है, what is your ultimate goal, so work towards it, I feel. बहुत बढ़िया। तो एक टाइम स्पैन फिक्स करो, होता है तो हो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ जिंदगी में, Yeah. कुछ और करियर करो, अटके मत Yes. रहो। दैट्स अ गुड एडवाइस। बट ये इतना क्यों पैशन है लोगों की लाइफ में कि नाम के आगे यार CA लगना चाहिए तो ज़िंदगी बदल जाएगी, मुझे CA अदिति परब लिखना है? वो इतना क्या क्रेज़ है यार? लोग लगे रहते हैं। व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? मुझे नहीं समझ आता वो। So I think when you start CA, you're very young. Okay, you start right after 12th, so you're barely like 19, 20 years of age. So when you start at such a young age and you take something like to you that is my inspiration to be in that life. And after like doing inter and doing 3 years of articles, it's like okay, now this is my life. At least I'll complete it and then move forward. And when it does not get complete, that becomes something kind of sad reality for you. So that is the reason why people are stuck on it. ये तो बात सही है। आई थिंक द सिमिलर क्रेज व्हाट वी हैव फॉर IITs, एक बार IIT कर लिया तो लाइफ बन Yeah, जाएगी, एक yeah, बार ये true. कर लिया तो Same, राइट। similar lines. या नॉट डिसिंग द बिग फोर्स, बट तूने जिंदगी जी है, राइट?
मुझे लगता है कि सीए की ज़िंदगी का फाइनल गोल होता है बिग फोर के अंदर जाके आर्टिकलशिप करनी, चाहे 10,000 मिले, चाहे 15,000 मिले, जब चाहे 17,000 मिले। बट व्हाट्स द रियलिटी ऑफ द बिग फोर? मतलब है उतनी ताम झाम जितनी 17 साल की उम्र में जब 12th खत्म होती है तो सीए की तरफ जाना मूव करते हैं? तो हाउ हाउ इज इट जेन्युइनली? So I would say it's best of both the worlds. Okay, like you have a lot of work, you have a lot of fun, and along with that, there are many sleepless hours you have to put in your work also. Like because they are big four, because they have this industry standard. Like every big four has their own quality. Like for example, Deloitte is known for its documentation process. So you have to learn from scratch, and you have to literally be best at it. Like you're not spoon fed there, and you're forced to grow up kind of at that young age. So I think it's quite a memorable experience. Like I think everyone should get an opportunity to do या that. या पर जब हो जाता तो फिर लगता है हो गया अब ना, मतलब कुछ और चाहिए, am I right? Yeah, it's like after one dream is accomplished, you look on to another, na? या देखो यही जिंदगी की खेल है, इट्स आई ऑलवेज से। तो ना जब ट्रैक करते हैं ना हम लोग, तो अभी मानसून आते हैं बॉम्बे के अंदर, हम ट्रैक करने जाते हैं, तो भाई उस ट्रैक पे जाना है, इस ट्रैक कल सुबह ही जाना है, यहाँ जाना है। तो नए नए ट्रैक्स भी आते रहते हैं, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हम जाते हैं नाइट आउट मारते हैं, यहाँ पे नाइट आउट के लिए फोर्ट के ऊपर ट्रैक करने जाएंगे। जब ऊपर जाके पहुँचते हैं तो लगता है बस यही था क्या, एंड आधे घंटे में चलो वापस चलो। So it's not about reaching at the top. It's about enjoying the Yeah, journey of moving into Deloitte. तो पहले दिन तुम Deloitte के yeah. अंदर घुसोगे ना, अगले दिन 4 दिन में तुम लगे नॉट डिसिंग Deloitte या। तो जर्नी इंजॉय करो बैठ के। हाँ, जो सीए की तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जो जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं वो काफ़ी क्रेजी होता है। मैं इनको बोलता हूँ एमबी के अंदर जब घुसोगे तो भाई तुम मुझे बोलते हैं फ़ोन करके, सर ये सब तो आपने बताया नहीं था, यहाँ तो लाइफ इन्होंने लेके रखी हुई है, यहाँ तो इतने Mm. इतने डंडे पड़ रहे हैं। Because it's, I feel it's always about the thrill and the kick which you get. Huh? Like I've Hmm. seen, once I became CA, like it was just pass or fail result. After that, like you feel that for one day, but the journey which you have lived over the years, going through the up and downs, that remains with you for life. Yeah, that's true, that's true. So जब अटेम्प्ट नहीं होता है, मुझे एक और प्रॉब्लम है सीएस के साथ। मुझे लगता है कि डिस्क्लेमर, बढ़िया डिग्री है यार, इंडिया सीएस चला रहे हैं आज, ठीक है भाई। हर बड़े से बड़ा आदमी वो अब उसने सीए रखा होता है, ठीक है। तुम अदानी से लेके एक छोटा स्टार्टअप वाला बंदा भी, किराना स्टोर वाले का भी आजकल सीए होता है। हाँ भाई, और विद ऑल दीज ऑटोमेशन इन प्लेस, तो इनके बिना गति नहीं है हमारी, वो तो पहली बात है ये। बट मुझे लग रहा है कि वो डिग्री पाने में अ, बच्चे का यूथ कभी कभी चले जाता है। True. हमारा भी यूथ ठुकता है, पर वो 11th 12th में ठुकता है पढ़ पढ़ के। पर तुम्हारा यूथ ठुकता है जब जवानी फूटती है ना, पंजाबी भी बोलते हैं मुझ फुट गबरू, जब मूछ निकलती है ना। मूछ तो आजकल बच्चों की 16 साल में 17, तो मतलब वो जो जवानी है ना, वो कॉलेज लाइफ, सोशल लाइफ, टेकिंग पार्ट इन कॉलेज फेस्टिवल्स, गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बाद में भी आ सकता है, बट एक कॉलेज लाइफ, एक वो 3 साल ऑफ सोशल इकोसिस्टम वेयर देयर इज अ प्रिंसिपल और डीन और अ डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, वो वाला मिस हो जाता है। डू यू एग्री अदिति? Yeah, I think कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. So हाँ, it's true in this case. But yeah. like at articleship, it's some completely different world. You enjoy with Hmm. those friends, you enjoy with those colleagues. So Hmm. it's like somewhere you have to compromise. समरी टू कॉन्ट्रीब्यूट। मैं तो सब सीईओ को बोलता हूँ भाई, हेलो, छोड़ दे नौकरी, छोड़ दे डिलॉयट, ये सब जाने दे। सीए के बाद एमबीए इसलिए करनी चाहिए बिकॉज कॉलेज लाइफ जीनी है अपने को बैठ के, हॉस्टल लाइफ जीनी है Yeah, बैठ that was actually one of the reasons why I wanted to do MBA. के। या तो अरे भाई, कॉलेज लाइफ में जाके तुम वो लाइन में बॉयज हॉस्टल में तो वो डब्बा लेके जब खड़े होते हैं ना, जब जब मग चोरी हो जाता है, कैन यू इमेजिन, मग चोरी होता है कॉलेज में, साबुन चोरी, कैन यू इमेजिन एनआईटी में साबुन चोरी हो रहे हैं, इतने इतनी गंदगी। तो वो चाबी चोरी होती है, जब कॉलेज में चाबी नहीं मिलती, फिर जाके ढूंढवाते हो तुम, दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है, वो सब भी एक ज़िंदगी है, उसके भी बड़ा मज़ा आता है। नेवरदलेस यार, गुड यार, बहुत ही बढ़िया। तो अदिति, डू यू थिंक एवरी सीए should think about MBA at some point of time, और who should not think about CA at all, कि मत करो भाई, बढ़िया चल रहा है तो CA नहीं, सॉरी, MBA at all मत करो भाई? So I feel like there are two reasons for doing MBA. One is career growth,
and one is obviously paisa. So if you're earning, like if your career growth is good in whatever firm you're doing, and you know your career path is fixed, okay, if I don't do MBA, and within 2-3 years I'll reach a position as good as MBA. So I think in that case, you should avoid thinking of MBA because it comes with a loan also. So that is one of the drawbacks. But doing MBA, one advantage is like you will fast forward your growth, you'll skip promotion levels, and you can go to higher management quickly. So that is one of the major reasons why people do MBA, so that their career growth can be fast. बहुत ही बढ़िया करियर ग्रोथ। और जब तुम डिलॉयट में काम करते हो ऐसा होता है कि हम भी सेम काम कर रहे हैं, हमें मिल रहा है 15,000 Uh, 20,000? and that is so true. Like one of my friends who was working in valuation in one of good firms. So I think his senior was MBA from IIM Calcutta or something. He was getting almost twice the pay, and this my colleague was not getting that much pay. So that is quite unfair to see it in some way. नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया है। ग्रेट यार, एंड बहुत ही बढ़िया जर्नी रही। होप कैट किंग वाज फैमिली वाज हेल्पफुल इन योर एंटायर जर्नी, दोज डैशबोर्ड, दोज मॉक टेस्ट, दोज वीडियो लेसन्स, दोज लाइव लेक्चर्स इन द नाइट, वाज दे हेल्पफुल? Yeah, so one of the things was like when I was not thinking about MBA also, I have this habit of going to YouTube at night. Like if I'm studying somewhere, I'll just have my earphones plugged in and I'll watch some random videos. So I remember you coming live at night and always talking with full of energy. So that was one of the good parts of the day. And the second thing was like for interview, I took up your course, and that in there booklets and dockets are there describing interview experiences, and those are really great, like having almost 50-50 experiences of top B schools and knowing how their interviews went, like from start to end, is something of a great deal for me to learn. It's 4 o'clock. ऑसम ऑसम, दैट्स ग्रेट। एंड हाउ वाज द स्टार्टिंग वन, जो रात को लेक्चर होते थे, वर्बल मंडे, वर्बल वेंसडे, डिड यू अटेंडेड दोज लेक्चर्स लॉन्ग बैक? वो सब याद है? So I have this habit of self studies, but so I used to mark out the topics which were difficult for me. So if any difficult sessions and if there is in the timetable, I used to attend those sessions at night. So it used to help me understand the concepts very well. दैट्स लवली। मैं तो हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी कर, जो मर्जी कर, नंबर ला और इंटरव्यू कॉल कर, है ना भाई? मेरे को कोई नहीं Yeah, फर्क पड़ता, true. कहीं से भी करो, नंबर लेके आओ बस, तभी मज़ा आता है। बहुत ही बढ़िया अदिति, यू हैव गिवन अस a lot of hope for the CAs who have been giving multiple attempts and then they are actually stuck in life. You're a role model for many people. I'm so proud of you. Boys and girls, drop in a comment. तुम्हें क्या लगता है यार, CA के बाद MBA वर्थ इट है क्या? या 12वीं के बाद अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट ड्रॉप करिए। और अगर तुम्हारा सपना है कि डिलॉयट में काम करना है, KPMG काम करना है, मैम 3 साल में आर्टिकलशिप, जो तुम सपना शुरू कर रहे हो ना, मैम खत्म करके आगे मूव ऑन हो रही है, बिकॉज देयर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज लाइक Bain and Co, McKinsey एक्सेट्रा, विच ओपन्स अप, विच आर डिग्रीज ओनली अवेलेबल फॉर CA plus MBAs। ठीक है, ये मेरा टेक है, पर कमेंट करके बताइए, डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच अदिति फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे यार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू, बाय बाय।